ओ भाई अंकल क्या बचे। So hi, what's up guys, welcome to the channel, and today's video will be on tires and bike. So people who are not into bikes or tires or don't want any information on that can skip this video of mine. So public, आशा करते हैं कि भाई आप सब खुश हो, घर पे सेफ हो and mental health से भी आपका सब कुछ भाई ठीक है, because it is not just important to be healthy physically but mentally as well. So let's see, today I will be going to Thane to change my tire, and post that I will be coming back home. The tire decision I have taken to go with is Timsuntyres. So बहुत सारे reason है कि Timsun क्यों choose किया. Of course the quality and the price is the majority of the part where my decision got influenced by it. But yeah, जो stock tire है अभी current Dominar में, I am not very happy with it. And a lot of issues such as grip and puncture issues are there with the tire. एक साल हो गया है बाइक को अभी, so this will be an anniversary gift for the bike. Let's hope कि Timsun के साथ रिव्यू अच्छा रहे. और जितना भी रिसर्च किया है उसमें तो इतना ही मालूम पड़ा है कि the tire is really good and lot of people from the Dominar community are using the same tire. And as it is going to start raining in Mumbai as well, चालू तो हो गया है but full fledgedly अभी तक चालू नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक किधर भी मुझे वाटर पार्क बनते हुए दिखा नहीं है. सो बिफोर दैट आई हैव प्लान टू चेंज द टायर. दैट विल बी बेटर फॉर मी ऑल्सो फ्यू टिप्स बिफोर द रेनी सीजन. बाइक का सर्विस कर लेना, लुब्रिकेशंस एंड ऑयल चेंज, वो सब चीज़ों पे ध्यान देना. एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू चेंज योर टायर्स तो गो फॉर दी सेट, मतलब बस एक ही टायर चेंज मत करना. Of course, a lot of problems may occur if you don't get the similar tire, if you plan to put one tire now and the other one a bit later. ओ भाई अंकल क्या बचे, अचानक से भगवान जैसे प्रकट हो गए बेचारे के सामने सिग्नल जंप करके. भाई अंकल को कोरोना नहीं पड़, अभी ये बंदा उड़ा देता. So for this same reason I plan to put both the tires. Of course मेरा आगे का टायर अच्छा है, it can go up till more 3000 किलोमीटर्स, बट रिस्क नहीं लेना है. हम लोगों में एक कहावत है कि 4 आण्याची कोंबडी आणि 12 आण्याचा मसाला. सो या आई एम नॉट गोइंग बाय दैट. आई एम प्लेइंग अ वेरी मच सेफ गेम विद द बाइक. एंड या अभी तक बाइक मेरा चला है 15,000 किलोमीटर्स. रिव्यू तो काफ़ी अच्छा है अभी तक बाइक का. ऑफकोर्स बजाज बीइंग बजाज, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू दी होंडा विच आई हैज़ टू ओन प्रीवियसली. आई हैड अ होंडा CBR 250 फॉर अराउंड 8 to 9 years. उसका खर्चा और इसका खर्चे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. राइट फ्रॉम द सर्विस कॉस्ट टू एनी ऑफ द मेजर स्पेयर पार्ट चेंजेस. सो या टिल डेट आई एम हैप्पी विद बजाज एक्सेप्ट फ्यू इशूज़. बट ठीक है यार, अभी इतने पैसे में इतना ही मिलेगा. And now less of the bug and more of the riding. So this is going to be a pure riding experience for you guys now. So hold on to your seats, put your headphones and enjoy the music and the visuals now.
I have reached my destination. So I'm going to Raj is the owner of it, and I was trying to find out a dealer for Timsuntyres, as there are only two dealers listed in Mumbai. One is there in Vashi, and other one is this guy. So the Vashi guy, I had a word, but apparently things couldn't work out because he was not keeping well, and by that time I came to know that Bhojaraj is the second dealer for it, and apparently I knew Bhojaraj from like 2 to 3 years, so I decided to opt out with Bhojaraj. So now the process of changing the tires starts. Ladies and gentlemen, So going for the test drive after fitting the tire. So let's see. There is a slight change in the height of the bike. I feel a bit taller now. So just an update, I am done with the tire installation. प्राइस रीजनेबल मिला. जो भी टिम्सन का टायर है आपको पूरा ऑल ओवर मुंबई सेम ही मिलेगा. सो आई विल बी ऑल्सो डूइंग अनदर रिव्यू ऑफ इट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक 2000 किलोमीटर्स के बाद या समवेयर, बिकॉज ऐसे ही देख के तो बोल नहीं सकता कि अच्छा है करके. बाकियों का रिव्यूज़ और मेरे रिव्यूज़ में फ़र्क तो रहेगा, क्योंकि मेरा थोड़ा राइडिंग स्टाइल थोड़ा हार्श है. ऑफकोर्स लॉट ऑफ पीपल विल से क्या छपरी जैसा चलाता है एंड ऑल, बट भाई हम सब में एक छपरी छुपा होता है. एज सून एज यू गेट अ फ्री रोड, वो सबका छपरी बाहर आता है. पर जब कोई देख रहा होता है ना, तो अपने आप सोफिस्टिकेशन वाला राइडर बाहर आता है फिर सबका, और जज करने लगता है. So yeah, thanks for watching my vlog. I'm in Thane now, and I'll be reaching home in like next half an hour. Thank you. Do subscribe to my channel and follow us on Instagram and Facebook.